फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to CricketNext. मैं हूं सौम्य कपूर and India are all set to take on England in Dharamshala in the final test of the series. लेकिन ये अश्विन के लिए बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है. It's going to be his 100th test match and the spinner has given a lot of credit to his family for supporting him, for walking those hard yards. Well, to talk about Ashwin's career, India's game and India's playing 11 and a lot more, I have with me Jamie Alter, Taos Sri, and will be shortly joined by Sahil Malhotra. Welcome to CricketNext, everyone. Jamie, I'll start with you. You know, as a cricketer, we all have played cricket. किसी न किसी लेवल पे हम लोगों ने खेला. And as a cricketer, you know, 100वां टेस्ट खेलना कितनी बड़ी चीज है. You know, टेस्ट मैच के जो एक स्टेटस है उसके हिसाब से. Massive. Only 13 Indians before Ashwin have got there. और ये 150 साल से ऊपर तो ये गेम चल रहा है. तो India played its first test match in 1952-54, I believe. Yep. तो अगर हम वहां से भी देखें 32, और इनसे 32 हाँ sorry 32. तो मतलब इतने सालों में सिर्फ 13 इंडियन प्लेयर्स 100 तक पहुंचे हैं. हैरानी की बात है actually. It shows how many of them fell by the wayside. In recent times, I think someone like Rahane probably came close, but unfortunately he didn't get there. तो वो सिर्फ एक एग्जांपल है. बहुत हैं जो 70, 80, 82 के आसपास कहीं ना कहीं उनका करियर खत्म हो गया. Ashwin is still here is remarkable. I think the fact that he was कुछ साल तक थोड़े sideline हो गए थे वनडे और T20 क्रिकेट से, इसका बहुत बड़ा हाथ है. I know a lot of people on the live stream were very very happy कि Ashwin came back to the one day World Cup out of the blue. तो मेरा ये मानना है कि यदि वो इतने साल से वनडे खेलते, because he's not the leanest, he's not the fittest player. So I believe the fact that he's here is because for the last several years he's been mainly a test specialist. और अच्छी बात है यार, क्योंकि यार इनसे अच्छा ऑफ स्पिनर तो मैंने कभी देखा नहीं. You know, outstanding. You know, and you see comparison आएंगे, कुंबले, Lyon. It's okay, that's fine. But 99 test matches and already 507 wickets. For me, that is one stat. You know, forget the conditions, forget the home record versus away. 507 wickets in 99 test matches. Nathan Lyon has 20 more wickets, but he's played 29 more test matches. Yeah. Ashwin is outstanding. Batting, I know last 3-4 साल से batting थोड़ा taper off हो गया, but if you can score 500s in 99 test matches, at one point you were a very fine batsman. So it's just amazing that he's still around. हमने कल भी discuss किया था, 1.5 साल और है. उसके आगे if he can extend his career, I wouldn't be surprised because Ashwin के dictionary में never word तो है नहीं यार. And on that note, I'll also welcome Sahil Malhotra from Dharamshala. Sahil, welcome to CricketNext first of all. Second, you know, you're gonna witness history. Ashwin, the Ashwin is going to play his 100th test. What do you make of this? आपने वो press conference attend करी है. He made a lot of comments about, you know, he credited his family a lot in that press conference. What do you have to say about that? No, again, very, very special moment because before Ashwin, only 13 have gone on to play 100 tests for India. Yeah. That speaks a lot. Only 313, if I'm not wrong, 313, yes, have played test cricket for India. So not many people go on to wear the whites for the country, and fewer go on to play for as long as Ashwin is doing right now, right? Zair Khan 92 tests, MS Dhoni didn't play 100 tests. These were like giants of the game, right? But सबको सब कुछ नहीं मिलता. And Ashwin, you know, you need to give credit to him for doing what he has been doing consistently over the years, kind of reinventing himself. But today was a different press conference, you know, and a lot of things which he touched upon. I haven't heard him in the past speaking about those things, and it was my question. I waited for the right time. I wanted him to be warmed up. मतलब वो अच्छे मूड में होने बहुत जरूरी है, because Ashwin can get a bit moody in press conferences. जब नहीं मन करता नहीं जवाब देते. But just when I thought the iron was hot, I kind of took him down that memory lane, emotional memory lane, where he spoke a lot about his father, mother, wife, and the kids.
how traveling with the family, looks like a holiday to the outsider, but how difficult it gets to be locked inside one room with the family, and especially on days जब आप अच्छा नहीं करते, you don't even feel like going down for dinners, right? And this was R Ashwin in an avatar I haven't seen before. वो क्रिकेट का बात करता है, साइड स्पिन, कन्वेंशनल स्पिन, ये सीम वो सीम, बट ये सुनना जरूरी था. And that is what he spoke at length about, and he addressed that he always wanted to play test cricket, and it's just that T20 kind of happened by chance for him. I would still say, मतलब बहुत लोगों को लगता है because of the IPL that it's the T20 which was his real calling, but no, it wasn't. He was playing first class cricket well before he actually played T20s for India. And in the red ball format, he now has made peace with the fact that कि जब बाहर जाके drop होता है, तो अभी आज उसने बोला कि मतलब Jadeja has been scoring runs more than me, and his numbers speak about that too. And when you travel abroad, the team management needs to take that call, because more than bowling, you need the batting from a spinner. So now he has kind of gotten into a space where he's at peace with life. और ये like I've attended a couple of press conferences in the series only, जहाँ पे अब आपको ऐसा indication आता है that जो जैसा चल रहा है, he's happy with it, he's enjoying his cricket. He was very animated during the fielding drills today too. वो जडेजा के साथ competition चल रहा था directed मारने का from close region. And it is good fun. And then net session, typical R Ashwin, यार, bowling start to stop, मतलब रुकना ही नहीं है. And नेट सेशन में बाद में आऊंगा, नेट सेशन की बात बाद में करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट दैट 40 कॉल्स दैट जो उन्होंने एक एनेक्डोट दिया, वो क्या कहानी है? कौन सा वाला? सॉरी, आई डिडंट गेट. उनके फादर 40 कॉल उठाते हैं. हाँ, 40 calls, yeah. So he was speaking about his father, that he has had a heart failure, he has been to the hospital a couple of times, but still he would like take random calls from 40 people every day when he doesn't do well on the field. वो लोग ज्ञान देते हैं ना, तो पापा को सॉफ्ट टारगेट पकड़ लेते हैं उस टाइम पे. But his father continues to do that, and he finds it very crazy. And he says the intensity with which he watches his every test match is just like how you would have done 2011 India versus West Indies, the Delhi test where Ashwin made his debut. So fathers don't change, and cricketing fathers are cut from a different cloth. We have seen plenty of them, and Mr. Ravichandran is no different. I remember one incident with him during the 2023 ODI World Cup in Chennai ahead of India Australia. A man gently walking with slippers, trousers, shirt. वो यहाँ पे एक ऐसा फाइल सा दबा रखे थे हाथ के अंदर, वो चलते हुए बिना किसी फंस के ऊपर गए, अपना टिकट कलेक्ट किया, नीचे आए. I realized that it's Ashwin's father, so I wanted to get that big exclusive story. But obviously, उस टाइम पे आपको story नहीं चाहिए होता. You just want to speak to the man, and that's what I did. I just spoke to him. I just wanted to speak to him. It was so nice talking to him. वो stadium से निकले, exited the gate, took the first auto and went home. No fuss, nothing. अब ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं क्रिकेट के अंदर यार, मतलब. एंड अश्विन, क्या बोलोगे यार, मतलब और क्या मतलब बोलो अश्विन के बारे में. लाइक it has been a privilege to see him play, right? मतलब all of us would agree that the way he has played test cricket, मैं बाकी फॉर्मेट्स में नहीं जा रहा, but मैं तो ये भी कहूंगा ODI जिस तरीके से जब वो ODI में वापस आए, he was a man kind of determined to do well for the side in the opportunities which he got. That first game ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाला, हाँ विकेट हेल्पफुल था, बट सही जगह पे बॉल डालना भी जरूरी है, सही पेस पे डालना जरूरी है. और अब तक अश्विन को फिगर आउट हो गया यार कि हाथ से उनका जब बॉल निकलेगा तो वो मैजिक ही करेगा. okay. ताउस भाई, I'll come to you for a comment here कि 100 टेस्ट, what are your views? कितना बड़ा मूवमेंट है किसी भी क्रिकेटर के लिए, एंड ऑफ कोर्स इंडिया में तो बहुत कम लोगों ने खेला है यार. और एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्या अश्विन को लेट हो गया है 100 टेस्ट खेलने में? अभी तक खेल जाना चाहिए, उनको जाने चाहिए था यार. अगर उनको फॉरेन में मिलता तो बहुत पहले ही निकल जाते आगे, और 500 विकेट से ज्यादा और बहुत पहले ही आ जाती. बट देन यार सबको सब कुछ नहीं मिलता. साहिल ने बोला exactly how it is and how that should be. I mean, it's a beautiful process, the journey that he was talking about in the press conference. More than the 100 tests, he was, I think he stressed on his journey, the family life, the way he went through it, ups and downs, and being ignored, and how he took it sportingly. That is the beauty of this guy. I mean, याद है मुझे यार, मुंबई में आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब एक बड़ा सा इवेंट हुआ था अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. अश्विन नया लड़का था, मगर वो ऐसी बड़ी बातें करता था साइंस के बारे में, रॉकेट साइंस, और क्या. मैं बोला यार ये बंदा ये है कौन. मतलब देखो, बहुत मतलब सी अश्विन वाज, ठीक है, ही वाज नोन लाइक अभी वॉशिंगटन सुंदर कैसा है, या कोई पूरा प्रोडिजीज कैसे, यंगस्टर्स कैसे आने वाले. बट देन अश्विन देन लाइक ही वाज टॉकिंग बिग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, साइंस, ये वो.
ये बंदा है कौन, ये इंडिया खेलेगा ऐसे साइंटिस्ट इंजीनियर बन के आया. I mean, खेले पहले से बंदे अनिल कुंबले एंड ऑल, बट those guys who must have been sorted, but this guy was like way beyond. But then इसका ये था कि यार this guy is more than a bowler, he's a thinker. वो सोचता है, वो strategist है, इसलिए वो फालतू बात नहीं करता. I mean, if you are like seen over the years, वो फालतू स्टेटमेंट नहीं डिलीवर करता है या ऐसे ही रैंडम. He doesn't waste his time. I mean, whatever opportunity he has respect for things which is not happening to him as well. I mean, चाहे हो या नहीं हो, he respects it. So that is the beauty of Ashwin, which I admire. The way he, I mean, bowling तो हमने देखा है किस तरह से कैरम बॉल है, किस तरह से, but he's beyond that. He's a class act. Respect करता है कि उसको खेलने भी नहीं मिला, वो भी respect करता है कि यार जडेजा की वजह से, वो जडेजा इज बेटर देन मी, ही गिव्स दैट ऑप्शन, एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन, वो रन कम देता है बाहर, मुझे विकेट लेने के चांसेस शायद कम होते, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है फैक्ट, rather than going after people, यार ये ब्लेम करने लगा, ब्लेम गेम खेलने लगा, पॉइंट करने लगा. So that is the beauty, and when this guy deserves, he served cricket. अभी मैंने I was looking at his 2011 वर्ल्ड कप इंटरव्यू जो मैंने किया था वर्ल्ड कप के इमीडिएटली बाद, सब प्लेयर्स दे रहे थे सबको, तो मैं भी जुड़ गया. तो it was he spoke only about Sachin, he spoke only about the World Cup win. He did not speak about like why he was not given a chance in semi-final. He's more than I mean, bowler तो है ही, 500 विकेट नहीं, he's a team man. He loves the game, passionate है. T20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वो बंदा एंजॉय करता है, और एंजॉय वो हमने सुना है यार, टेनिस बॉल से आया, वो टेनिस बॉल क्रिकेट भी एंजॉय करता था, वहां पर भी उन्होंने कैरम बॉल सीखा है, वहां पर भी सब सीख किया है. तो कितना मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है, अगर तुम देखोगे टेनिस बॉल से आना, फिर यहाँ पर वही डिलीवरी अप्लाई करना. बल्लेबाज तो था ही, उसने बल्लेबाजी को प्रायोरिटी कम देकर अपने गेंदबाजी को जाना, क्योंकि दिस गाय न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड टू डू इन लाइफ. तो वो डिस्कवर करता चला गया, और मुसाफिर है तो मुसाफिर की तरह चलता चला गया. ब्यूटीफुल करियर, आई लव्ड हिज बॉलिंग एंड आई होप ही कंटिन्यूज फॉर अनदर लाइक 2-3 more years. वो खुद ही जानता है बंदा. ताऊस भाई, आपके पास कोई शायरी नहीं है आज अश्विन के लिए? नहीं यार, नौशाद भाई से मिला था कल, मगर कुछ ज्यादा बात नहीं हुई बहुत दिन. But sir, I'll also like to ask you the same question. Do you think ये जो 100 टेस्ट आया है, probably I'll ask this to Jamie as well, ये थोड़ा लेट आया है, ये पहले हो जाना चाहिए था because of certain combinations and all, cricketing analysis के हिसाब से थोड़ा लेट हो गया है. I think how long are we going to play the same old record of Ashwin not playing enough tests overseas? I think that's अब वो हो गया. He's 37 and soon to enter the 100 test club. And by now, I think he has also made peace with that. He has understood. I'm not sure whether I wasn't that convinced whether he has like completely made peace with that. But from the look of things, surface पे तो at least लग रहा है यार कि हो गया अब. मतलब it's time to I would like to know that कि surface पे लग रहा है और पूरी तरह. Please, can you just elaborate? No, I'm just saying, like he said that he has understood the fact that team wanted Jadeja's batting more than they would have wanted Ashwin's bowling. That is what I could make out, and it makes sense that if he's thinking on those lines, अगर आप ऐसा cricketing logic apply कर रहे हो to make peace with the fact, then so be it. And late आया, अब वही बोला ना, जहीर खान तो 92 पे रुक गया था. वो अश्विन ने आज बोला भी, Zahir Khan took 5 wickets in his last test outing but never played test cricket for India again. So cricket is cruel. Anything can happen यार. मतलब you've seen the greatest of names not play test 100 tests. 99 test Azharuddin. What a career it must have been. Like bloody 99 test. कौन पहुंचता है 100 test पे? Beautiful. Right. Yeah. Jimmy, what do you think? I mean, if he's missed more test matches, it's not because he's been injured. I can recall a long spell where Ashwin was out like a Jadeja or a Bumrah or a KL Rahul. इंजरी के कारण वो बाहर नहीं हुए. I mean, लगातार इंडिया के पिछले 6 टेस्ट मैच इंग्लैंड के अंदर he's not played. So he just had to play one of those 6 and the 100 tests would have come a long time ago. So ठीक है. Unlike Nathan Lyon, he doesn't have very good numbers outside of his home country. That's a big dampener on his career. It's not a coincidence कि देखो, जिस साल हार्दिक पांड्या इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे, उसी साल में उनके बॉडी ने बोला अब मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा. ये है 2018. इत्तेफाक की बात नहीं है कि जिस साल में हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हुए, उसी साल रविंद्र जडेजा ने चुना अपनी बैटिंग को रिवैम्प
करने के लिए. And 2018 was a pivotal year, not just in Indian cricket, but in Ashwin's life. ये जो उन्होंने आज जिक्र किया कि मैं मानता हूं कि मेरी बैटिंग 18 के बाद इतने अच्छे नहीं हुए. Look at it. Hardik Pandya fades out of the test team. Ravindra Jadeja's batting goes. It's like Jadeja 2.0. Jadeja realized कि मैं कभी अश्विन नहीं बनूंगा. Where can I beat this man? Is with the bat. The numbers, there's no comparison. पिछले 6 साल में जो जडेजा बैटिंग से यहां से वहां गए, उल्टा अश्विन यहां से वहां गए. So it's not surprising that he does not play so many test matches overseas. Is he to blame? To some extent, yes, but I think इनके साथ काफी नाइंसाफी भी हुई है as well. Yeah, okay. Sahil, coming to एक फैक्टर आप ये काउंट करिए, कैप्टेंसी का फैक्टर, कैप्टेंसी डेफिसिट बहुत रहा है यहाँ पर. यू नो व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन आउटसाइड, कप्तान यहाँ पर अश्विन पे आउटराइट भरोसा किया जब इंडिया में खेले हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेस दिखाया भी एंड द वे ही इज डिलीवर्ड, ही इज वन यू मैचेस लॉट ऑफ. बट वहां जाके शुरुआत हुई थी 2014 ऑस्ट्रेलिया में ही, मतलब शुरुआत तो काफी समय से, 2014 से ही शुरुआत ये आने लगे थे, विराट कोहली, धोनी, ये भरोसा नहीं आ पा रहा था अश्विन को लेकर. व्हेन ही वाज नॉट, आई मीन द मैन, द सेम गाय हु हैज बीन गेटिंग दोस विकेट्स, 4-5 विकेट्स इन इंडिया, he doesn't deliver this similar way in condition like South Africa, Australia, England और New Zealand. वहां पर सवाल उठने लगते हैं. फिर वो आपकी ग्रेटनेस पे सडनली एक ये आ जाता है, यार ये 5 विकेट तो इधर निकाल रहा है, 5-5 मैच जिता रहा है, और यहाँ पर आके क्या हो रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैचेस नहीं जिता पा रहे हो. तो वहां पर एक यू नो एक फैक्टर कप्तानों के दिमाग में आया, जिसकी वजह से जडेजा ये भी थे आपका कंस्ट्रेन भी करते थे, दूसरा बल्लेबाजी भी करते थे, तीसरा आपका रोल स्पिनर्स का ज्यादा नहीं रहता था, फास्ट बॉलर्स का रहता था मोस्टली, और इसकी वजह से इनका चांसेस माइनस हो जाता था. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि कप्तान भरोसा नहीं करते थे, इसलिए इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बाहर नहीं मिली. Probably. चलिए, coming to the bowling department bit, साहिल, what do you think? अगर जाडेजा और अश्विन दोनों को खिलाना है तो कौन बैठ सकता है, considering the conditions? बारिश होके चुकी है एंड कहीं ना कहीं कंडीशंस ओवरकास्ट देखने को मिल सकती हैं या सीमिंग फ्रेंडली देखने को मिल सकती है. तो व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोना सिट आउट? देखो, अगर आप आज की कंडीशंस की बात करोगे, अगर आज जो हुआ और कल आपको ऐसा दिखेगा, तो मैं कुलदीप को खिलाऊंगा. आज धूप अच्छा था एंड द विकेट, यू नो, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ कपल ऑफ डेज नाउ. कल भी बोला कि विकेट में आपको कुछ नहीं दिख रहा टू सजेस्ट दैट यू प्ले 3 or 4 सीमर्स. देयर इज नथिंग इन द विकेट. व्हाटएवर मैजिक will happen in the air. So you just need to be mindful of what happens on the opening day, because there's forecast of rain, and more than the forecast, I would trust the local advice which I'm getting ever since I've come here, because no one knows, you know, the weather conditions better than the locals. वो बादल देख के बता देते हैं निकलेगा कि बरसेगा. तो ये लोग बहुत कन्विंस्ड हैं यार कि मतलब 7 तारीख को तो सर बारिश होगा ही होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी हुआ और अगर थोड़ा सा moisture also seeps into the surface, then probably Kuldeep doesn't remain as effective. You know, अगर ठंड का भी मैं बात करूं तो yes, it's difficult for a Chinaman to kind of come good in these conditions, and this is probably not the March of 2017 where Kuldeep took those 4 wickets against Australia. It wasn't that cold. इस बार ठंड है यार. और अभी मतलब जो आप ये फोटो देख रहे हो, अगर ये फ्लड लाइट के ऊपर आप जो व्हाइटनेस देख रहे हो ना, इतना नीचे स्नो मैं यहाँ नहीं देखा हूँ. 4-5 बार आ चुका हूँ मैं, बट इस पीरियड के अंदर द स्नो इज डाउन. सो मतलब देयर हैज बीन स्नोफॉल more than the usual, and it's not appropriately timed in the sense that it's not following the seasonal route which it mostly does. Call it global warming or whatever is happening in the environment, that's a different debate. But उसके चलते आपको बहुत weird activity weather में दिख रही है across the country, and McLeodganj and Dharamshala have been no different. So अगर कल ऐसा ही रहता है और परसों ओपनिंग डे बारिश का आपको पूरा श्योरिटी रहता है, तो कुलदीप एक गैम्बल हो सकता है. पिच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप कहो कि यार मतलब जयदेव उनादकट जैसे सौराष्ट्र के लिए 8-9 विकेट ले जाता है, 7 ले जाता है, हरा टॉप एकदम दिखता है, वो वैसा विकेट नहीं है. अभी भी देखो ना, फोटो के अंदर ग्रीन में अलग सा चमक रहा है, वो कल से ही ऐसा है. मतलब जितना मर्जी, नो वंडर राहुल द्रविड़ हैज बीन, यू नो, नियर द पिच इतना कम ड्यूरेशन के लिए ड्यूरिंग दिस टेस्ट मैच, क्योंकि उसको मालूम है जाके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला. वो मैं जस्ट अभी स्टोरी ईमेल करा है, क्रिकेट नेक्स्ट पे आने वाला है, so I'll request the viewers to read it. He was the last person to go near the pitch today because first he was enjoying that chopper ride from Bilaspur to Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, और अभी मालूम भी था कि मैं जाके यहाँ क्या करूंगा यार, कोई डॉक्टरिंग टिंकरिंग से कुछ नहीं होगा. लेकिन यहाँ मेरा जेमी से सवाल है. जेमी, वो बिजी थे इसलिए नहीं जा पाए पिच पे, या वो कल जाएंगे? और ये चीज हमें कल डिसाइड करनी चाहिए कि he will talk about the tracks. I was really hoping this topic came. I have to link everything
ने बड़े अच्छे तरीके से, Because there's सटीक some- तरीके से, कैन यू हियर मी? Yeah, can you just repeat what you said? पहले, हाँ मैं कह रहा हूँ, पहले 2 टेस्ट मैच में विनीत, पिछले 2, और अब साहिल तीसरे मैच की लगातार, दोनों ने जिक्र किया है राहुल द्रविड़ कितने गौर से पिच को देखते हैं। ठीक है, अब हो गया, आज किसी ने मुझे वहां से एक फोटो फॉरवर्ड किया था, और क्योंकि सौम्या तुमने जिक्र किया था तौस भाई से शेरो शायरी, उस तस्वीर के साथ एक छोटा सा कपलेट आया था। ठीक है, अर्ज है, इरशाद इरशाद इरशाद, इरशाद। हिल्स हो या वैली, सुबह हो या रात, फादर फिगर द्रविड़ खड़ा रहेगा मालियों के साथ। आई वांटेड टू ब्रिंग दिस बिकॉज भले ही वो बहुत कम समय के लिए है, जिस रिपोर्टर ने वो तस्वीर खींच के मुझे आज भेजा, आई एम लाइक, अब क्या देख रहे हैं सारा पिच को, एंड साहिल एप्टली ब्रॉट इट अप, सो आई वांटेड टू गेट अ चांस टू ब्रिंग दैट अप। आगे और भी था, पर मैं वो नहीं कहूंगा यहाँ पे। ओरिजिनल लिखी हुई है, मुझे लगता है जेमी भाई की, यहाँ पर किसी से लिया नहीं है। नहीं, तो मैं करता तो it would have been more poetic, but yeah. No, more than today, more than what happened today, schedule didn't allow, or probably he had a lot of stuff to do. पहले कपड़े बदलने थे, फिर ट्रेनिंग एरिया में जाना था, तब तक वो क्यूरेटर आज मेरे को बोर होते हुए दिखे यार, कि हमारे बड़े भैया नहीं आए, मतलब वो बीसीसीआई के सेंट्रल क्यूरेटर, लोकल क्यूरेटर, बिकॉज कल तो दे डिडंट कम, सो आज भी मतलब वो ऐसा सुनसान सा बैठे हुए थे, कोई आया नहीं हड़काने के लिए। और उसके बाद मतलब इस मैच को तो छोड़ो, व्हाट हैपेंड आफ्टर द लास्ट मैच रांची, यू वन द मैच कन्विंसिंगली, मतलब कन्विंसिंगली चलो हफ एंड पफ किया, बट उसके बाद जो पार्टनरशिप था मेड द स्कोरबोर्ड अ वेरी कन्विंसिंग रीड। आफ्टर द मैच गेट्स ओवर, यू कांग्रेचुलेट शुभमन गिल, आप ध्रुव जुरेल से बात करोगे नहीं, पहले पिच, वो पिच देखने फिर चला गया कि डे 5 में उसको मॉर्निंग सेशन कैसे खेलना है, जो हो नहीं रहा था। सो मतलब दैट ऑब्सेशन हैज बिकम अनरियल। और अभी just from borrowing that press box chatter, a couple of very serious journalists were sitting in the press box और बोल रहे थे शायद ये नीचे देख के ही चलता है अब, कि इसको सड़क में भी पिच दिखती है, कि नीचे ही देखता है। और मतलब वो ट्रेडमार्क पोज है ना, ऐसे हाथ करके खड़े होने का क्यूरेटर के साथ, विद द शॉर्ट्स एंड द लेगिंग्स अंडरनीथ इट एंड द ओकलीज एंड द कैप, वो मैं मतलब तस्वीर। और ये सिलसिला अभी से नहीं चालू हुआ, ये मैं लास्ट ईयर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से देख रहा हूँ। मतलब आई हैव कवर्ड ओनली दैट सीरीज एंड दिस टेस्ट सीरीज, लाइक जो होम सीरीज हुआ, तो उसके बियॉन्ड तो मैं नहीं इतना भी टेस्ट देखा, बट वो 8 मैचेस के दौरान अभी 7 मैचेस, मतलब वो अनरियल है यार। लेकिन मतलब नहीं, सारा ब्लेम द्रविड़ का नहीं है। आपने रेजिंग टर्नर्स बनाए तो भी आपके बैट्समैन फेल हो गए, अभी वो क्या करेगा ना हेडमास्टर, कैसे सुधारेगा बच्चे। यार विकेट जैसा बना रहे हो यार, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर अब क्यों है ये फालतू का। आज भी जब वो आया, अब मुझे पता नहीं वो क्या किया, मैं वो लिखा लास्ट पैरा में ही लिखा, क्योंकि मैं श्योर नहीं था। वो जाते जाते आया बाय बाय बोलने या कुछ करने, उसके जाते ही ग्राउंड स्टाफ आया, पीले रंग का टंकी, जैसे हम वो पिचकारी नहीं पहनते बैकपैक वाला, probably Jamie's kid would know because Holi is coming now, so like you wear like a backpack, so yellow backpack tank kind of there, और वो स्प्रे चालू है कुछ। मैं कहा दिस इज फॉर श्योर अ ड्राइंग एजेंट, क्योंकि पानी होता तो आप स्प्रिंकलर से कर देते, बिकॉज इट वाज वोन एंड sprinkled in a manner, so I thought it's a drying agent, but again why do you need that, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे। I'll just ask this question, I'll just come to ताउस भाई, और उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है साहिल आपके लिए। सिर्फ धर्मशाला जब हम जाते हैं तो सिर्फ पिच की बात नहीं होती, बहुत सारी चीजों की बात होती है। ताउस भाई, आपका क्या कहना है, क्यों राहुल द्रविड़ इस जगह पे भी पिच को देखने जाते हैं, व्हाई? और मुझे जवाब शायरी में चाहिए, अरे मैं थोड़ी शायरी यार, एनालिसिस वाला नहीं चाहिए, शायरी रहती है। चुराई शायरी दे दो। द्रविड़ ठीक रहता, एक हर बंदे का एक अलग अलग स्टाइल रहता है, एक अलग अलग नेचर रहता है पढ़ने का विकेट को। कोई देखिए कल सिलेक्शन कुलकर्णी वाला एपिसोड देखा आपने? अगर आप एक जबरदस्त वीडियो हमारे इस पे ही चल रहा है, दैट वाज समथिंग। आई मीन वहां पर तमिलनाडु विकेट पे बंबई में रहने वाला कोच, बंबई का कोच आपको बोल रहा है कि यार अब गेंदबाजी करो, तो ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, व्हिच शुड नॉट हैव बीन सेड इन द ओपन। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, बट देन जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 9 AM पे टॉस डिसाइड हो जाता है, तो कितना क्रूशियल रहता है टॉस इंडिया में, तो आप समझ जाइए। तो एवरी टाइम राहुल द्रविड़ गोज एंड वॉचेस क्लोजली, तो कुछ ना कुछ तो पता चल जाता है यार, कहीं ना कहीं। तो देखिए एंड में जवाब तो किसको देना है, आपको देना है, हमको देना है, साहिल को देना है, जेमी भाई को देना है, किसी को देने, एंड में राहुल द्रविड़ को देना है जवाब बीसीसीआई को, कि भाई कैसा डिलीवर किया आपने परफॉर्मेंस, या क्या किया आपने, क्या गूफअप किया आपने, टॉस क्यों नहीं जीत के बल्लेबाजी या गेंदबाजी क्यों नहीं की।
या आपने सीरीज कैसे हार गए, तो जवाब तो उनको ही देना, हमको किसी को नहीं देना. So this guy is being a studious guy, somebody who is very very serious, a great thinker who keeps on thinking about it and goes into the every bits and pieces, minute details of each and everything. अब वो इसका ध्यान नहीं रखेगा तो किसका रखेगा यार, हर चीज का. तो मतलब आप वो भी देखेंगे तो यार फॉर्म भी नहीं रहता था बंदे का तो भी सीरियस रहता था, फॉर्म रहता भी था तो भी वह ऐसे ही रहता था. तो बड़ा ही अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया बंदा, नहीं तो आई मीन दैट्स हाउ ही इज बीन राहुल द्रविड़, एंड दैट इज द ब्यूटी. आई मीन यू शुड हैव कैरेक्टर्स यार, कैरेक्टर. तो राहुल द्रविड़ का एक ऐसा कैरेक्टर है, दादा सौरव गांगुली का ऐसा था, तेंदुलकर का हंसी मजाक या अलग रिफ्लेक्ट होता था, विराट कोहली का अलग स्टाइल था, रोहित शर्मा का अलग, आर अश्विन ग्रेट थिंकर अगेन. आई मीन कोच बन जाएंगे तो शायद वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे राहुल द्रविड़. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो ही गोज देयर, स्टडीज द विकेट की यार आज क्या करना है, अगर आपको इन्फॉर्म करना है क्यूरेटर्स को यार घास काटनी रखनी है, वो सब तो करना पड़ेगा. तो एवरी डे यू हैव टू एनालाइज यार कितनी ग्रो हुई ग्रास, कितनी कम हुई, कितना कम करना है, कितना इंच काटना है, कितना सेंटीमीटर. तो बंदा हर चीज में इन्वॉल्व रहता है, व्हिच इज आई थिंक फाइन फॉर हिम यार. क्या करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं देखा जवाब साहिल हमको थोड़ी के देना है. आसपास. बट साहिल ओके, पिच की बात ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशंस की बात ठीक है, लेकिन धर्मशाला में एक चीज की बात और होती है, एंड दैट इज द आउटफील्ड. और बारिश हो गई है, तो any talks around that thing? There shouldn't be any. Even if there is, it should be left in the dressing room or the hotel room, because outfield is world class. This is world class. Matlab, it looks so beautiful, and I've been saying this. Matlab, pictures hai na, this is nothing. This is like a natural wonder. इसको 8th wonder of the world अभी बोल दो यार. ये जो स्टेडियम है ना, this is unreal यार. मतलब इतना ग्रीन, इतना लश लगता है आपको. आप जो व्हाइट देख रहे हो ना, अभी मैं बहुत तरीके से फोकस किया, कैमरा पे क्लिक किया, वो व्हाइट मेरे को कैमरा में आ ही नहीं पा रहा. It is so white. I am not kidding. I've seen the Triund range from close quarters, जो दौलादार का है, which is the whitest in the region. वो व्हाइट जब पास से देखते हो लगता है यार क्या गजब है. ये उतना ही व्हाइट डिस्टेंस से लग रहा है क्योंकि फ्रेश ना हुआ ना. और उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने स्टेडियम बनाया ना, मतलब hats off to these guys यार for thinking about this. They could have gone big, right? They could have had a couple of more stands, थोड़ा capacity बढ़ा सकते थे, but इन्होंने ये minimal approach जो रखा ना, minimalistic approach जो रखा है, that is blending so seamlessly with the natural elements. मतलब इतना अच्छा लगता है ना ये स्टेडियम. मतलब और आउटफील्ड मतलब इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो क्लियरली दिख रहा है. एंड इट शोड दैट दे डिडंट गेट इट राइट द लास्ट टाइम अराउंड आफ्टर रीलेइंग द सरफेस. जो सरफेस रिले हुआ था इंडिया इंदौर टेस्ट के दौरान, उसके बाद बारिश बहुत पड़ा, वो नहीं ठीक था. बट अभी परसों हेल स्टॉर्म हुआ, कल शाम को आई वाज देयर, आई चेक्ड, no problem whatsoever. Again, we were there for the entire day. Both teams did their fielding drills, were diving around, were throwing their bodies around, something which we didn't see in the India-New Zealand game. India fielders weren't diving around यार. वो क्योंकि मतलब अभी आप अगर ये फोटो देखोगे ना, इसके अंदर जहाँ जनता खड़ी हुई है ना, ये जो थोड़े बहुत प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ तक पैचेस थे वर्ल्ड कप में. I'm not exaggerating that. वहाँ तक पैचेस थे. मतलब it looked very ugly. Even the bowlers run-up looked ugly in the World Cup. But right now you wouldn't find एक ऐसा स्पॉट तक आपको नहीं मिलेगा जहां पे ग्रीन तक इनकंसिस्टेंट है. इट इज दैट लश. सो नो क्वेश्चन अबाउट आउटफील्ड एंड फिनोमिनल जॉब. ओके कमिंग टू, दिला दिया अकेले जाकर यार साहिल. क्या भाई? लालच दिला दिया अकेले जाकर. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेडियम यार. जाना यार बिल्कुल. मतलब you still have 2 days. Let's travel. अक्टूबर में यहाँ पे वो थोड़ा पैनोरामल एक्टिविटी देखा था कि वो बादल आ गए थे ग्राउंड में, कुछ हरकत हुआ था रात को. बट रात का गेम मुझे लगता है जस्टिस नहीं करता है. यहाँ पे T20 मत करो, IPL मत करो, आप डे मैच पकड़ के करो यार. ब्यूटी तब है. 5 बजे के बाद यहाँ क्रिकेट का मतलब नहीं है. इसको डेजिग्नेट कर दो, एक टेस्ट सेंटर दे दो, एक मैच हर सीरीज का, एक मार्की मैच, irrespective of whatever politics go on in the BCCI. Just give Dharamshala one game. And this town इतना छोटा है. धर्मशाला में आपको होटल कुछ नहीं दिखता, इतना फैसिलिटी भी अराउंड नहीं है. ओनली कपल ऑफ 5 stars फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड इट. बट इवन फॉर द लेसर मॉर्टल्स लाइक अस, यू कैन फाइंड चीप अकोमोडेशन क्लोज बाय. यू कैन स्टे. देयर आर लॉट ऑफ ईटिंग ऑप्शंस. मतलब कोई फाइट नहीं है. एंड द इंग्लिश फैंस एंड मीडिया आर हैविंग अ गाला टाइम एवर सिंस दे हैव कम हियर यार. मतलब वो तो ऐसा आज मेरे को बोला कि रात को मैक्लोडगंज आओगे तो आपको शायद लंदन की सड़क का याद ना आ जाए. मैं कहा भाई पहले तो मैं लंदन गया नहीं, बट हाँ जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे एकदम
मतलब होने वाला है, कुछ होने वाला है आज, इतना पब्लिक आया हुआ है यार. True. Okay. Coming on to the playing 11, Jamie, Sahil mentioned in his report that Rajat Patidar looked a bit scratchy. और जिस तरीके का सीरीज में हम लोग के पास बढ़त है, do you think we can give him a chance or we should move on? पता नहीं यार, 50-50 call, right? It's all good to say that they want to reward him, they want to give him. अब खबर है कि वो स्क्रैची लग रहे हैं. वो तो मैं 3 हफ्ते पहले बोल सकता था आपको कि वो स्क्रैची लग रहे हैं. क्या फायदा, राइट? इफ ऑन द ईव द टेस्ट मैच ही इज लुकिंग स्क्रैची, इससे बड़ा आपको क्या इंडिकेशन चाहिए कि फिलहाल इस करंट स्टेट ऑफ माइंड में वो नहीं लायक हैं. You gave him 3 chances. Better players have got less chances. Move on, yeah. You wrapped up the series. Play anyone, but don't play him. He's not gonna get you the runs you expect him to give. It's been 32, 18, 15, duck. Next क्या है? Duck से कम है नहीं कुछ. And if he's scratchy in the nets is always a final indication. So if his second last nets he's scratchy, final indication. उस बेचारे को please मत chance दो एक और. Yeah, very quickly, I'll just quickly add to something which kind of stood out for me in the net session. It wasn't how he was not looking convincing against the spinners, but he was cleaned up shouldering arms to a throwdown specialist. I couldn't understand that. मतलब आप throwdown पे बैट खड़ा कर रहे हो और डंडा खा रहे हो तो मतलब कुछ गड़बड़ है. एंड आई एम जस्ट रिपोर्टिंग फैक्ट है. पर्सनली तो मैं चाहता हूँ वो खेले, क्योंकि मुझे पता है अगर वो अभी नहीं खेला तो मुझे शायद टेस्ट स्क्वाड में भी वो नहीं दिखेगा. मुझे ऐसा फीलिंग है, अभी नहीं खेला तो शायद टेस्ट स्क्वाड में भी नहीं दिखेगा. बट हैविंग सेड दैट, ही लुक्ड वेरी स्क्रैची टुडे. राहुल द्रविड़ वाज स्टेशन्ड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब बिल्कुल सामने उसको देख रहा था. सो कुछ थॉट चालू है. बट अगर आप ये लॉन्ग गैप के बाद जो नेट सेशन हुआ है, थोड़ा क्यू अगर मैं वहां से लूं, पार्टिकल वेंटेड टू बैट, वो एकदम लास्ट वाले बैच के अंदर बैटिंग करने गया और अलूफ ही था थोड़ा, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ द सेशन. एंड अटेंशन वाज बीइंग पेड टू रजत पाटीदार. सो लुक्स लाइक अभी आई कांट से एनीथिंग विद लाइक अथॉरिटी और कन्विक्शन. लुक्स लाइक ही विल गेट अ चांस, बट ही लुक्ड वेरी स्क्रैची. Okay, let's move on to the comments, please. Yeah. Priyanshu is asking, guys, can he break 619 of Kumble? Taus bhai, it's for Ashwin. Can Ashwin break Kumble's 619? 507 wickets, 100 test matches, 507, right? 507. 507. 100 टेस्ट मैचेस. तो अभी और खेलना पड़ेगा उनको बहुत, लाइक अनदर नहीं हो सकता है. थोड़ा मुश्किल रहेगा. 2 साल खेलेंगे, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट. बट अगर अच्छा स्पेल आ गया, लंबा सीजन है अभी, यू आर प्लेइंग बांग्लादेश, देन यू आर प्लेइंग न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया में आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी डाउटफुल है. बट कितना ताउस भाई बोलिए ना, कितना खेलोगे? बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट हैं, न्यूजीलैंड भी 2 हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. टोटल ऑफ 4 टेस्ट मैचेस, टोटल 5, 4 और 5 एट होम. ऑस्ट्रेलिया में 1 या 2 खेलोगे आप. दैट्स इट. उसके बाद शेड्यूलिंग क्या है? वो सारे खेलेगा भाई ऑस्ट्रेलिया में. I'll tell you. Ashwin will play most of the games. No, I knew this question would come. ठीक है, देखो, I brought the notes also. I knew this would come because मैं खुद सुबह के शो पे I was thinking, as per the FTP 23 to 27, right? India has 38 scheduled tests. ठीक है, 11 हो चुके हैं. ये परसों का मैच आपका 12 होगा. ठीक है, so that's 27 matches left in the FTP and 28 if India make the final next summer. Okay, he's taken 507, 19. अगर उसको divide करे, not the best indication. If you divide it, it's 5 wickets per test match. ऐसा नहीं होगा. He needs 113 to surpass. If you take the very simple thing of 5 wickets per match, he needs 23 test matches. ठीक है, 11 इस साइकिल में हो चुके हैं, 12 जैसे कि मैंने कहा था if he makes the final. 25 के फाइनल के बाद इंडिया खेले ना खेले फाइनल irrespective, उसके तुरंत बाद इंडिया plays 5 test matches in England, right? It's very conceivable कि अश्विन होंगे, लेकिन जिस इंसान ने पिछले 6 इंग्लैंड टेस्ट मैच में 1 नहीं खेला, how do you see going? I still believe he'll be in the squad. He's not going to get old in the next 18 months. But 5 test matches in England, Jadeja has to be injured or dropped for him to even get 3 of those 5, right? Uske baad, then there's 2 against West Indies, 2 against South Africa in November, December. Technically, if you go by the 5 wickets per match, he needs 23 test matches. वो तो आजकल बहुत आसान है. But there's too many ifs and buts in that, especially whether he plays all 4 in Australia and whether he plays 5 in England. यदि ये नहीं हुआ,
बहुत मुश्किल है. Very difficult. बहुत मुश्किल है. Yeah. Okay. Next one, please. वैसे ब्यूटीफुली डन हाँ जेमी भाई लवली स्टैटिस्टिक्स और पूरा काउंटिंग I knew this question would come आज ना कल, so I said rather than give just guess, let me try and give some logic to it too. I did some basic. अक्सर देते हैं हम लोग तो हाँ. Sahil, something important from the event today from Rohit Sharma and Rahul Dravid. ब्यूटीफुली डन हाँ, कभी खुशी कभी गम देखियो, कभी खुशी कभी गम देखियो सारे. हाँ हाँ. शाहरुख खान उतरता है ना हेलीकॉप्टर से, तो मेरे को तो जब वो हेलीकॉप्टर का चॉपर का ब्लेड जब रुक रहा था ना, रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ आ रहे थे, तो मेरे को वो ऐसा लगा सम जया बच्चन इज लाइक विद द आरती का प्लेट, एंड जब तक दरवाजा खुलेगा उससे पहले, दरवाजा ठक करने से पहले दरवाजा खुल जाएगा. आई सॉ फ्लैशेस ऑफ बागबान जहां पे हेमा मालिनी वुड ओपन द डोर बिफोर अमिताभ वुड कम. मतलब आई डोंट नो यार, मतलब अब this is theater, proper theater, and only Dharamshala has, you know, the people to kind of pull a stunt off like this. Anurag Thakur being Anurag Thakur, he wanted Rohit and Rahul in Bilaspur, arranged a chopper by road. It wouldn't have been possible. Rohit and Rahul reached Dharamshala in the morning. सीधा चॉपर लिए एयरपोर्ट से, वहां गए, आधा घंटा पौना घंटा शक्ल दिखाई, चॉपर लिए, स्टेडियम आए, स्टेडियम में आके कपड़े बदले, नेट शुरू किया. It happens only in Dharamshala. बस है ना. साहिल ऐसा तो नहीं दिख, ऐसा कोई विजुअल. करेक्ट. वो तो ग्राउंड से वो तो ग्राउंड में उतर गया स्टेडियम में पूरा डायरेक्ट. साहिल ऐसा कोई विजुअल तो नहीं दिखा जहां राहुल द्रविड़ और देवदत्त पाटिल साथ में बैठे बेंच पे और राहुल बोल रहे टीम में सिलेक्ट हुआ, जैसे शाहरुख खान को बोलता है. वो सरफराज बताओ फिर. Okay, next one. Again, it's all in a lighter tone. I'm not kind of doing which people could think I'm doing. It's all in like fun and games. Okay, next one, please. Ashwin versus Lyon. Who is better? Jamie, I'll start with you. And I just want to listen. नहीं, देखो. As I said, Nathan Lyon has 20 wickets more than Ashwin, right? But he's played 28 more test matches. So 28 test match. It's a very poor man's analysis. 28 test matches more and only 20 wickets. It says had Ashwin not been dropped, वो कहाँ होते? यदि वो 128 test match खेलते, वो कहाँ होते, right? But the point is not that. Ashwin is a tremendous bowler, right? But something has to be said. Look, नेथन लायन ने अपने घर में क्या किया वर्सेस अश्विन ने अपने घर में क्या किया, जमीन आसमान का फर्क है. That has to do with the pitches. It has to do with the quality of spinners coming through Australia, right? But if you, and I've gone through every single stat. मुझे पता था ये सवाल भी आएगा. You look at the only country where Lyon has played and Ashwin has not played is in Pakistan, right? उन सारे देशों में Ashwin's record is slightly inferior. Barring Sri Lanka to what Nathan Lyon has done. Nathan Lyon has gone to New Zealand 3 times. He's taken 20 wickets. Ashwin 3 baar जा चुके. He's taken 3 wickets. Nathan Lyon has done far better in Bangladesh, a country where Ashwin should have bossed them, right? So there are certain countries where they played the same 2-3 matches, right? Does that mean Ashwin is a lesser bowler? You don't have to. Look at what Joe Root said in that podcast to Sky Sports. Joe Root knows a thing or two about playing spin. He says, with Nathan Lyon, it's overspin and the way he brings in back pad and short leg into place. Very, very skilled bowler. But he says the doubt that Ashwin puts in your mind is far greater. These are two off spinners in their mid to late 30s, both at 500 wickets. Stats tell you not the full story, but they tell you most of the story. कहाँ वो छोड़ जाते हैं is things like what Ashwin has done, right? अब सामने वाले बोल सकता है यार he's played half his test matches on these turning tracks. Again, factual inaccuracy. It depends how you define a spinning wicket, right? If you talk about undercooked / rank turners, of his 60 odd test matches, I've counted only 5 have come on bad wickets. That's a too small a sample size. The other 300 odd wickets he's taken on those non-bad wickets have been the kind of wickets we've seen in this series. Are they rank turners? No. Are they square turners? No. Are they undercooked? No. There's Nagpur 2015. There's Pune 2017. There's 2 matches against Australia.
against England in 2021, just post COVID, and there's one in last year's DGT. I've counted 5. Ho sake I'm wrong. 8 kar lo. The sample size, you cannot say he's taken his wickets on ranked turners. Yes, they've been traditional Indian wickets, but ye to 1932 se chal raha hai. So who's better? I will still say Ashwin, but the stats will say Nathan Lyon. Be the judge. Yeah. Okay. But I have a couple of I have a couple of questions. I have a couple of questions for Sahil because he's to leave. Sahil, you can answer them and you can go. Hey, ताउस भाई बोलो, छोटा सा है तो बोलो ना. ले लो. सवाल ले लो. Taus bhai. No, I would like to an answer from him on the previous question. The Ashwin versus Lyon debate. Yeah. Taus bhai, your thoughts about Ashwin versus I would still say Jamie bhai, I would still say कि spin friendlier wickets. वहाँ पर I mean look at Nathan Lyon, conventional spinner. Okay, he doesn't have the variations that what Ashwin has. Lucky, natural, God gifted. Both are different ways. Both have different style of bowling. This guy has bounce in his bowling. Well, he relies more on variations. But Ashwin playing in Indian conditions, turning tracks, okay, may not be bad, but they are still spin-friendly tracks, which helps bowlers, spinners. While Lyon, Australia, ठीक है, जहाँ पर bounce मिलता है. England, he's done well. New Zealand, he's done well. So if you count the other countries as well, this guy has been, Ashwin may not have got opportunities there, but then what if this guy played here in India more and Pakistan more? He would have got much more wickets than Ashwin. Correct. Also, he comes from a country where they only play one spinner, right? Ashwin has had to always sit out. So there's many ways to see it. The point is Nathan Lyon has done better in these countries than Ashwin has. What the factor is, I don't know. Is Ashwin less skilled? No. Maybe it's the mental thing. Aaj usne zikr kiya us baat ka. Who knows? But yeah, if he got 28 more test matches, I think he would have done way better than Nathan Lyon. Nathan Lyon has played 28 more test matches, and only the difference is 20 wickets. For me, that's a big stat right there. Yeah. Okay, can I have the next round, please? मैं वही बोला Sahil playing agent. Yeah, that's what I said. No matter what you do with this pitch, कुछ काम नहीं होने वाला. तो इसीलिए मत ही करो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो. Let nature do the tricks. मत करो. करना अब न्यूजीलैंड बांग्लादेश वाला सीरीज में करना, फावड़ा लेके मैं कह रहा हूँ पिच पे उतर जाओ, खोद दो 22 यार्ड 2 दिन पहले, पर अभी कुछ मत करो यार, अभी कुछ नहीं होगा. Sahil, what do you think? Pransh is asking 3 pacers and will they have the debut? I guess you have answered this. Yeah, so same no. अगर कल बारिश का आपको अंदेशा लग जाता है तो फिर कुलदीप के साथ रिस्क मत लो. और देवदत्त डेब्यू, I think it's unlikely. Okay, and last one, in these conditions, whom will the team management prefer, Mukesh or Akashdeep? Should be Akashdeep only ना यार. अब आपने मुकेश को अगर बिठाया तो मतलब मैं तो सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कुछ हेरा फेरी अपना कुछ दिमाग में इनके कुछ चलता है ना, वो खुराफात एकदम परेश रावल की तरह बैठे बैठे की कुछ डिफरेंट करना है, वैसा करके अगर मुकेश को खिलाना है तो अलग बात है. बट आकाश, अब आप यू हैव सेट दैट ऑर्डर राइट, यू जस्ट गिव हिम 1 इनिंग टू बोल. अभी तो वो टेस्ट भी नहीं हुआ है ठीक से, एक ही बार बॉलिंग कराया ना. एंड साहिल ऑल्सो जिस तरीके का कंडीशंस है और जिस तरीके की सिचुएशन हमारे पास है, वी आर नॉट रियली अंडर प्रेशर. वो तो फ्रीडम उसे आप दे सकते हो. गो एंड एक्सपेरिमेंट विद द बॉलिंग. तो है बॉस, अगर WTC फाइनल क्वालीफाई करना है तो 4-1 करना पड़ेगा. मतलब आपको नहीं पता ना ऑस्ट्रेलिया में क्या ढप्पा होने वाला है आपको. वहां तो शॉर्ट बॉल चलने वाला है ना, वहां पे तो फिर बैक स्पैज़म्स एंड द बैक ट्रबल. लेकिन कुछ प्लेयर्स जाने वो तो फिर स्कोर पे डिपेंड करेगा ना कि शॉर्ट बॉल्स किसको परेशान करने वाले. खेलने वाले हैं हमारे पास. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. दोबारा आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे. बाय बाय. ओके, नेक्स्ट काउंट प्लीज. Jimmy closing on 700 wickets and Bairstow closing on 6,000 runs and Ash's 100 tests. Only hope not to see Ash chasing on drives and mid-wicket drives in his 100 tests. So I guess that's a comment from Rajdeep. Yeah, we hope so. The mid-wicket drives and the on drives have been a problem as well. Next one, please. Does Bairstow has worst average to play with 100 tests? We know he has been little in baseball era. How do you see his test career, sportsman? Jamie. सवाल तो अच्छा. I don't know off the top of my head कि जिसने 99 टेस्ट मैच पूरे किए where his average stacks up. I know it's not the greatest average,
नो डाउट। और हमने कल भी कहा था कि अगर 10-12 साल पहले कोई बोलता कि यार ये इंसान जो स्क्रीन पे है ये 100 टेस्ट मैच खेलता, मैं बोलता ठीक है भाई रहने दे, बट हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो। बट आई डोंट नो स्पोर्ट्स फैन वेयर ही स्टैंड्स in terms of worst average for someone who's played 99. 100 हुए नहीं, 99 तो हो गए। पर हाँ, मालूम करके कल के शो पे आपको जवाब देंगे। या बट ऑल्सो जिमी, अगर एवरेज की बात करें या इन स्टैट्स की बात करें तो बेसबॉल हैज ऑल्सो प्लेड अ रोल इन दैट ना। अगर आप आउट हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके एवरेजेस पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बट इज एवरेजिंग 36, जस्ट ओवर 36। हाँ, so after 99 full test matches, that's again for someone who bats at number 5-6, that's not bad, you know। पर क्या है कि हम 40 के आगे लोग को very good category में डालते हैं। Johnny Bairstow has been inconsistent before he had that silly golf accident, जिसके कारण वो कम से कम 8-9 शायद 10 महीने बाहर थे। He was averaging some 70 under baseball. He had like 500s in like some 7 test matches. Post that injury, Johnny Bairstow has not been the same. और वो पहले खिलाड़ी नहीं है जो सर्जरी के बाद वापस आके, he came back from surgery, Ashes में कुछ नहीं किया ज्यादा, और इस सीरीज में तो बहुत ही बेकार लगे हैं। So let's give him the credit of not being the same post surgery. Very lucky to be playing 100 test matches. मैं ये तो जरूर कहूंगा। Yeah. Okay, next one please. Why India don't tour? New Zealand can easily win series there. No Jamison, no Bolt, no Wagner. Saudi past his prime can easily add Sena scalp there. Taos bhai, please take this. मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, न्यूजीलैंड क्यों नहीं जाते हैं? मे बी टाइमिंग का, ये ब्रॉडकास्टर्स का कोई इशू रहेगा ऐसा, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि भाई अर्ली मॉर्निंग मैचेस होते हैं और ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है फैंस की तरफ से, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलता है या आपको साउथ अफ्रीका में भी। देखिए ना, टेस्ट मैचेस कम भी हो गए साउथ अफ्रीका में, इफ यू लुक एट दैट, ऑल्दो एक्साइटिंग टेस्ट मैचेस होते हैं, बट दे प्ले ओनली 2 टेस्ट मैचेस, which is surprising. They can play more. They can play 3-4 test matches in South Africa. So that New Zealand could be one of the reasons. हाँ, जब New Zealand यहाँ आते हैं तो they play like 3-4 test matches, maximum impact 3 जाता है। So there is not much exciting, और broadcasters का भी say रहता है mostly कि भाई मुझे ट्रैक्शन कितना मिलेगा और पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि at the end of the day cricket is a business and industry, and industry thrive कैसे करती है? पैसों पर करती है, बिना उसके आगे मार्केटिंग सेल्स कुछ नहीं होता। So that could be one of the reasons, but अगर कोई reason जेमी भाई को मालूम है और या सौम्या, you can like chip in. I think it's that. It's just the fact that it's not a lucrative tour, and it matches start at 3 in the morning. तो वही होगा, you know. वही होगा. It must be commerce. वो अलग बात है कि वहां पे इंडिया को 2009 के बाद एक टेस्ट मैच जीत नहीं सकी वहां पे. So it's not like these bowlers or anything less. जो भी है, ये जो एक आया है विल और रूक, वो बहुत है इंडिया के लिए. The last time they went there, they were smashed 2-0. So वो बात नहीं है. This Indian team in the current lineup will struggle there. But I think it's commerce, like Tosba said. जिस तरीके का इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग लाइनअप है इस समय, it's going to be fun in those conditions. If the team was going there, I would say, bhai, Mohammad Shami to hai nahi, you know. And so right now the team, barring Bumrah, the team is not the best, which is why janta hu 9-10 mahine hai, I'm not very hopeful of this Australian tour, because I don't think Shami will ever come back the same Shami we know, you know. So, but 8-10 mahine hai, we'll talk about that then. Yeah. Okay. So also, if you look at that, like also if we go into that paying ball cricket या test ball जो paying ball से खेला जाता है, वो भी कम हो गया. Yeah, correct. One of the reasons that कि यार या तो player 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है because of the ball that swings a lot और side problem हो रहा है, but they have not openly discussed it. तो अगर वो आप अप्लाई करेंगे न्यूजीलैंड में तो 1.5 दिन में खत्म हो जाएगा यार पूरा 2-4 इनिंग का टेस्ट मैच यार. Yeah. Okay, next one, please. I'm saying I've got some names. I've got some names for sports fan. Michael Atherton played 116 test matches. He averaged 37. Ian Healy played 117. He averaged 27. So he's not the worst. There's 2 names I just found. Okay. Last one, please. Beautiful, yeah. I like the stats. Okay. Jamie and Sahil bhai, when will Dravid sir go to Adelaide to look wickets of T20 World Cup? No, इस कमेंट से मेरा एक और क्वेश्चन है, भाई यूएस में क्या करोगे? वहां तो सब कुछ मेकशिफ्ट है.
T20 क्रिकेट Hills हो या valley. अगर सीरियसली जवाब दे तो उसमें ज्यादा रोल नहीं रहता यार, बैटिंग विकेट्स रहती है नॉर्मली। आप 2016 में भी T20 देखे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देखिए थे, एश सोडी ने शायद धर्मशाला में कहाँ पे ट्रबल किया था विराट कोहली और इन लोगों को। दैट वाज सैटनर, धर्मशाला नो? नॉर्दर्न साइड या मोहाली में कहीं तो किया था, नॉर्दर्न साइड में, जहाँ पर विकेट थोड़ा स्लो थी। तो आप इतना ट्वीक नहीं होता है T20 क्रिकेट में अगर सीरियसली नहीं नहीं तो मजाक में तो बहुत सारी चीजें होती है यार। नहीं, you're right, absolutely. True. चलिए, let's coming back to the test match. We just hope it turns out to be a great one, considering we also have WTC points at stake. Will we see more supporters from England rather than India and Dharamshala? अब ये तो जाके देखना पड़ेगा पूनम, but I just hope खचाखच भरा रहे स्टेडियम, because it's a very beautiful stadium और क्रिकेट देखने का बहुत मजा है वहाँ पे. I watched a couple of games there. बहुत मजा आता है देखने में. Apparently 5,000 England fans have gone to Dharamshala. तो अगर हमें उनको आउट नंबर नहीं किया ना तो फिर ये देखिए, जो BCCI treasurer is from Dharamshala, so he has a lot of responsibilities over his head to get people in. चलिए, टिकट भेज दें यहाँ पर, हम भर देंगे. चलिए, let's just hope this turns out to be a very entertaining game, but India comes out victorious in this one. Well, thank you gentlemen for joining me in this session. We'll connect again and talk more about this match and a lot of things related to cricket. Thank you, bye bye, good night, Shabba khair. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.